Hello everyone. Today we have Arpit Porwal here who has scored 118 in the mhcet 3 years LLB entrance exam. So congratulations Arpit. आपको कैसा लग रहा है ये स्कोर? आपने जब स्कोर का डाउनलोड किया होगा, आपका स्कोर आपने देखा कि आपका इतना बेहतरीन स्कोर आया है. What was your reaction at that point of time? I was relieved. My nervousness was relieved. काफी anxious था थोड़ा पहले, but जैसे ही 118 देखा, मेरा मेरा दिल शांत हो गया. I felt really good. What was your family's reaction after they came to know this? My parents are proud of me. Great. In fact, all of us are very proud of you because this is such a competitive exam and इसमें अच्छा स्कोर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है because बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो हर साल ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं. सो अर्पित, वुड यू लाइक टू शेयर कि आपने ये एग्जाम की प्रेपरेशन जो है वो किस तरीके से की, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी इसके लिए? So, ma'am, I began my preparation around a month before the exam day. That was because I would suggest that somebody who's preparing for next year starts the preparation a little bit before that. बट मेरा मैंने 1 मंथ पहले इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरा थोड़ा अनसर्टन था. मेरे मार्कशीट्स वगैरह अभी तक आए नहीं थे एंड मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जाम लिख भी दूँ तो मैं क्या कैप के लिए बैठ पाऊंगा. बट फॉर्चुनेटली मेरे मार्कशीट्स वगैरह सब आ गए, मेरे डॉक्यूमेंट सारे इन लाइन आ गए, तो मैंने फिर रजिस्टर करके 1 मंथ मैं कहूँगा कि जो जल्दी में उनके लिए काफी सफिशिएंट है 120 स्कोर करने के लिए. 1 मंथ अगर आप बराबर प्रिपेयर करो तो. करेक्ट. सो अर्पित, आपके कौन से वीक सब्जेक्ट्स थे और आपके कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि दिस सब्जेक्ट आई एम डेफिनेटली स्कोरिंग, आई डोंट हैव एनी वरी फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी? माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाज इंग्लिश. इंग्लिश हमेशा हमेशा से मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे ज्यादा उस पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी. सिर्फ थोड़ी रीडिंग स्पीड पे मैंने कंसंट्रेट किया. बाकी वोकैबुलरी वगैरह वाज ओके, वाज एट पार. But if you want to score higher, we need to work a little bit on vocabulary as well. So I did that. But English was very easy for me. Uh, the challenging part was static GK. Uh, static GK was a little difficult for me to cope with क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कहाँ से तो मैं पढ़ सकता हूँ, बट क्या पढ़ूं वो थोड़ा डाउटफुल था. बट somehow I managed and थोड़ा वक्त लगा स्टैटिक जीके को बिल्ड करने में, बट हो गया. Okay, okay. So you focused on your weak part and you made sure कि आप उसको practice कर रहे हो. So this exam is an MCQ based examination जहाँ पे आपको time बहुत अच्छे से manage करना होता है because you have to solve 150 questions in 120 minutes. मतलब कि एक question के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है. So आपने ये time management जो है वो किस तरीके से किया और did you make sure that your paper was complete before time कि आपका पेपर ऑन टाइम पे कंप्लीट हुआ? The single answer to this question is mock tests, ma'am. Give as many as one can. Even if you give 50 mock tests, it's less. You can keep. I gave around 25, and that's the only way I could manage my time. I finished the paper in I think 1 घंटा, 1 hour. Okay, It took me around 1 hour, 5 ऊपर 5 नीचे. But I okay, finished the paper in about 1 hour, and that I think helped me a lot because I could go through my paper more than one time, especially the questions that I had marked for review. Because एक बार तो मैंने पूरा पेपर मैंने नंबर 1 से नंबर 150 क्वेश्चन तक देखा. उसके अलावा मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था वो मैंने दो बार देखे वो क्वेश्चंस, ताकि आई कुड मेक द बेस्ट डिसीजन आई थॉट इन दैट मोमेंट. okay. Fine, good, Arpit, very good. So you managed your time very well, and mock test I think was a brahmastra for you where you could manage everything. Good, 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 Arpit. 100%. And now with this score, what is the college you are aiming for?
Obviously, I'm aiming for GLC and ILS. Any one is good enough for me. ओके फाइन सो आफ्टर लॉ कुछ सोचा है कि क्या करोगे आप व्हाट आफ्टर द ग्रेजुएशन ऑफ लॉ Not really, ma'am. First, I want to delve into the field. मैं पहले अंदर घुसूं, मैं पहले पूरा एक्सप्लोर करूं, जो तरीके के मैं जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए मैं टारगेट कर सकता हूं, मैं बिफोर ग्रेजुएशन में मेरी इंटर्नशिप्स में उन जॉब्स को एक्सप्लोर करूं, जितना हो सके उतना अलग अलग लोगों के पास काम करूं. एंड आई थिंक when I do that, I'll be ready to make a decision before I graduate whether or not I want to get into a particular field, even inside the field of law. Okay, fine. I think that's the one of the best decisions which you can take for your career before getting into it, before experiencing it. We cannot decide anything कि next आगे क्या करना है. So पहले explore करते हैं, पहले समझते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड और थियोरेटिकल वर्ल्ड कैसे आपस में मिलते हैं और काम एक्चुअली में किस तरीके से एक लॉयर करता है, क्या क्या उसके ऊपर ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस होते हैं और क्या प्रोसीजर्स होते हैं हर एक चीज में, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है rather than making the decision first. Very good decision, Arpit. Thank you. Okay. Yeah. Any future tips you would like to give to the future law aspirants which are coming up? Any tips you would like to share with them? Yes, ma'am. Excuse me. Yeah. So, well prepared is the most important section for anybody who's giving MHCET for law is the GK section, static and current affairs. So even in this year's paper, they had asked questions from 2020 as well as 2023, and it's not like 2023 was given more emphasis than 2020. 2020, 2021, 2022, and 2023, all 4 years had pretty much equal emphasis, even though this year's current affairs total marks of were I think 5, maybe 10. Most of it was static GK, but it's equally important that you read your newspapers, you read your even if you do choose not to read your newspapers, you must. It's an absolute must that you keep up with your everyday news on an everyday basis, so that when you start preparing for your exam, luckily I have always been somebody who's into the news. So for me, it was not a very difficult thing to cope up with the current affairs part. So that becomes very easy for you when you actually sit down and say कि हाँ अब मुझे exam की preparation चालू करनी है. It becomes very easy for you. It's half a subject less for you to prepare. Correct, correct. Fine. So as Arpit has told, guys, current affairs is one of the vast topic which you have और जीके current affairs हमेशा साथ में ही पूछा जाता है. So आपका जो है पढ़ाई का लेवल, अगर current affairs आप पहले से ही, जो आपका 1 year का पीरियड होता है current affairs का, अगर आप पहले से ही current affairs का प्रिपरेशन करते आ रहे हो, आपको पता है कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है, तो आपका वो एक टेंशन, वो एक बर्डन, एक साल का वो जो चीजें आपको पढ़ने की है वो कम हो जाती है. That is extremely good, tip which you have given to the future law aspirant, because काफी सारे बच्चे current affair part को ignore कर देते हैं because it is so vast and उसका period भी जो cover करना है that is also very vast. So ये mistake नहीं करनी है, भले ही वो 4 या 5 मार्क के लिए आए, but आपको GLC और ILS में जाने के लिए 1 मार्क भी पीछे लेके आ सकता है और 1 मार्क आपको GLC ILS भी दिला सकता है. So make sure कि सारे subjects को equal importance दे रहे हो, be it any subject, each and every subject, each and every topic of every subject is very, very important. Correct. Okay. So thank you, Arpit, for this tips to the future law aspirants. And I think the students will be very much benefited from it. And EduCARE family wishes you all the very best for your career. Thank you very much, ma'am. Thank you.